naturally wished that Soganiji should have direct interaction with Pujya Gurudev. With this end in view, they repeatedly suggested him to go to Pujya Gurudev to personally express his deep gratitude towards him. But Soganiji said, "Please don't bother yourself for me. I won't be able to say anything to him, and I can't fabricate a reason to go to him." Yet, respected Soganiji had immense heartfelt gratitude and devotion for Pujya Gurudev. His heart-touching pourings came out in letters and conversations from time to time. Some examples are, "Pujya Gurudev is for me more than infinite number of Tirthankars. How can I cut open my heart and show in what high esteem I behold Pujya Gurudev in my heart? Truly, Pujya Gurudev is never far from me. Wherever I am, my Gurudev is within me. I look Maharaj Sahib, Pujya Gurudev, only as a pure, static and vibrant embodiment of thyself. Hey Gurudev, only intense devotion to you will cure my sufferings. There is no other cure. This I know for sure. Hey merciful, take mercy on the intensely pathetic worldly condition of this being who feels burdened even in spiritual surroundings. Take mercy, take mercy. That's the only prayer." Respected Soganiji shunned fame. His true heart got expressed thus: "I have practiced what Pujya Gurudev has ordained. I do not like it if I get praise or fame in the world. Whether a flower blossoms in a garden or in wilderness, whether you enjoy its fragrance or not, its value lies in itself, irrespective. Whether anyone knows about it or not is immaterial to the soul. Infinite number of people have perpetually engrossed in their self, but nobody knows them even by name today." To describe his first son's marriage as an inauspicious occasion, what attitude was it? Can those who don't have full grasp of depth of true Jain philosophy ever appreciate the astonishing meaning embedded in such expression? In 1964, he happened to attend the 75th birth anniversary of Pujya Gurudev in Dadar, Mumbai, and basked in his holy shadow. Coincidentally, this was to be his last encounter with his Saviour, because the day after his return to Kolkata from there, that is on 7th June 1964, he left for his heavenly abode following a heart attack. This world is a moving wheel. Every being comes to the stage of the world to play one's part, and once it is over, departs for the abode one deserves. When Pujya Gurudev heard of Soganiji's demise, he just said this: गुरु कहान को प्राप्त हुई जब देह विलय की दुखद खबर, उनके श्रीमुख से निकले तब सहज भाव से थे उद्गार। आत्मार्थी ने किया सफल ये दुर्लभ मानव जन्म, अरे देवलोक में जन्म लिया है, निकट भव्य यह जीव खरे। This truly wise soul has completed the mission of his life, has gone to heaven, and would attain complete salvation in very near future. तो फंसा हुआ नहीं है, फजूल का मान के बैठा है फंसा हुआ। वो ने ऐसा कहा कि मैं जो पैर छोड़ दूंगा
तो मैं गिर जाऊंगा, मैंने हम पकड़ के पिंजरे में डाल देगा। तो निहाल भाई ने उनको कहा कि भाई देखो, मैं कहता हूँ अभी मर जाओ तो अच्छा है, चलो नहीं मरोगे ने और व्यवहार के पक्ष में आ जाओगी तो फंस जाओगे पिंजरे में, सारी ज़िंदगी गुलामी में रहना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कहा और दृष्टि का विषय जो दिया कि मैं उड़ने की ताकत है, और ताकत जब उनके ख्याल में आया और पैर छोड़ दिया, उड़ गया। 1961 में पिताजी का कुछ बदमाश लोगों ने भ्रमणा से छुरा मारा पेट में और बहुत जख्मी हुए। तुरंत उनको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों को उनके बचने की कोई आस नहीं लगी, फिर भी उन्होंने हम लोगों के आग्रह से जोर देने पर ऑपरेशन किया। डॉक्टर को बिल्कुल ये विश्वास नहीं था कि जिएगा, इसलिए वो ऑपरेशन करके चले गए। 2 दिन बाद जब उन्होंने अस्पताल में खोज खबर ली, उनको मालूम हुआ कि वो व्यक्ति जीवित है, तो उनको खुद को आश्चर्य हुआ। ऐसे इतने बड़े प्रसंग से गुजरने के बाद भी पिताजी इसके अधिक चर्चा नहीं करते थे, और ऐसा परिवार में ऐसा कहते हुए सुना गया है कि वो एक लौकिक मृत्यु के प्रसंग से बाहर आ पाए हैं, तो इसका एकमात्र कारण गुरुदेव से मिला तत्वबोध है। After the passing away of Pujya Sogani Ji, some respected, learned fellow believers who had come in close contact with him thought that if the precious and deeply spiritual letters addressed to fellow believers and compilation of diary notings of his discussion with them during the period 1959 to 1964 were to be published, it will prove to be of immense benefit to society at large. Thus, with the kind blessings of Pujya Gurudev, the material got published in 1967 under the title of Dravya Drishti Prakash, which is a gem in the treasure of Jain spiritual literature. पूज्य सोगानी जी का स्वर्गवास के बाद में कोई कुदरत से कोई धन्य घड़ी में गुरुदेव ने सोगानी जी के अक्षरदेह को प्रकाशित करने की इजाज़त दी। उन दिनों में बम्बई रहता था, ये कार्य भावनगर हो रहा था। वहाँ से मेरे पास ये प्रूफ पढ़ने के लिए आते थे, एक हिंदी भाषी होने के कारण। जब मैंने उनका वांचन चालू किया प्रूफ रीडिंग के हिसाब से, तो मेरे तो आज भी वो मैं दृश्य याद करता हूँ तो मैं भाव विह्वल हो उठता हूँ। उन्होंने मुझे बताया उस अक्षरदेह के माध्यम से कि अवलंबन योग्य जगत में कोई है तो दूसरे सारे जगत अनायतन है, एक सिर्फ तुम्हारा आत्मा ही, शुद्ध आत्मा ही आयतन है। ये समाज पर सबसे बड़ा जो उनका उपकार है वो ये है कि इस भ्रमित समाज को ये पता नहीं था कि धर्म का प्रारंभ कहाँ से करें, कैसे हो। बाबूजी का ऐसा जीवंत चरित्र और ये अक्षरदेह जब पढ़ने में आई तो हम तो निहाल हो गए, और हम तो आज भी उनके चिर ऋणी हैं। विशिष्टता ये लगी कि उसका प्रारंभ उन्होंने मोक्षता से जो किया, शायद जगत में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते कि वो किस जिज्ञासा से, किस झंखना से, किस उत्कंठा से वो आत्मा की शांति खोजते थे। हम लोगों में ये कमी है कि वो साधना चाहते हैं लेकिन साधना की पृष्ठभूमि को साफ सुफ करना नहीं चाहते। Pujya Sogani Ji has elucidated his grasp of fundamental and deep issues of Jain philosophy in amazingly original, heart-touching and powerful style. For example, nothing is favorable or unfavorable to me in this world, while emotion is momentary. Entity of thyself remains strikingly untouched.
to do is death-like painful. I am a vibrant, solid entity, not a stream of emotions. Thoughts roll on. Vibrant self remains unmoved. Emotions may focus on me, but whom do I need to focus upon? Let emotions and thoughts be in its zone. I remain rested in myself. After an intense and deep deliberation and study of the publication for a few months, Pujya Gurudev got appreciatively convinced of the highly enlightened inner state of and spiritual heights attained by Pujya Sogani Ji, and he read him as a strong-willed and determined soul. Thereafter, in course of general interaction with close fellow believers, he said, आत्मार्थी की अंतर्दृष्टि का गुरु को विश्वास हुआ। आत्मार्थी की अंतर्दृष्टि का गुरु को विश्वास हुआ। होकर भाव विभोर गुरु ने मंगल आशीर्वाद दिया। सौगानी तो गए स्वर्ग में, पुनः मनुज भव पाएंगे। मुझसे भी पहले मुक्ति में वे पुरुषार्थी जाएंगे। मुझसे भी पहले मुक्ति में वे पुरुषार्थी जाएंगे। जो जो ये बातें समझ में आती हैं, तब तब हृदय उनके और गुरुदेव के प्रति अद्भुत और अपूर्व महिमा से छलक उठता है। इस विषय की जानकारी और ऐसे ज्ञानी पुरुषों का समागम मेरे जीवन की एक महती सौगात और उपलब्धि है। Thus, Pujya Sogani Ji's life journey is exemplary instance of worldly cycle to total salvation and bliss. He has got firmly implanted as an idol in the heart of every aspirant of spiritual well-being. गुरुदेव के पास जाने के बाद उनकी महिमा का पता चला कि वो तत्वज्ञानी थे, तत्व को प्राप्त कर चुके। उसको लेके इतनी महिमा आई और अपना सौभाग्य समझता है कि हम उनके पुत्र के रूप में इस संसार में आए। उनके व्यक्तित्व के बारे में जितना सुना है, उनकी प्रारंभिक भूमिका और तैयारी बहुत ज़्यादा थी। इस मार्ग में आने के पहले ऐसा लगता है जैसे ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड थे इस मार्ग को या इस बोध को ग्रहण करने के लिए। और इसलिए जब बहुत अल्प बोध हुआ, थोड़ा सा बोध हुआ, तो उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा चला इमीडिएटली। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा हुआ और इसीलिए फलस्वरूप सम्यक दर्शन प्राप्त किए। मुझे तो इस बात का फ़क्र है कि मैं उसी आबो हवा में पला बढ़ा जहाँ सौगानी जी रहा करते थे। बाबूजी ने सही समझण पर जोर देना और ये बताना कि उसी में भविष्य का सम्यक गर्भित है, इसी बात को हर समय ध्यान में रखना ही हम लोगों के सबके लिए उचित है। बाबूजी के साथ 1964 में गुरुदेव के दर्शन हुए, वही हर समय हम लोगों को ध्यान में रहता है और उसी समय उनकी धार्मिक रुचि की तरफ हम लोगों को मालूम पड़ा। पूज्य सौगानी जी साहब से प्रत्यक्ष योग दर्शन के रूप में हुआ और एक बार कलकत्ता से बम्बई पूज्य गुरुदेव श्री की 75वीं जन्म जयंती के वक्त ट्रेन में साथ में रहना हुआ। उस वक्त हमारी आयु तो काफ़ी छोटी थी, लेकिन एक बात आज भी गूंजती रहती है कि मैं अपरिणामी हूँ, मैं अपरिणामी हूँ। और जब यह बात याद आती है तब सौगानी जी साहब की चैतन्य प्रतिमा बस वो प्रतिमा की तरह ही सामने झलकती रहती है। एवं उनका अधिक परिचय तो सही में देखा जाए तो इस युग में पूज्य सौगानी जी साहब यानी गुरुदेव के सर्वोत्कृष्ट शिष्य रत्न एवं एकावतारी धर्मात्मा जो हम सभी के जीवन के परम आदर्श हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के भावी पुराण के अलौकिक अत्यंत महिमावंत अद्भुत पात्र ऐसे सौगानी जी साहब को हम सभी के कोटि कोटि वंदन। પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની સોનગઢ ઉપસ્થિતિમાં સોગાનીજી સોનગઢ આવેલા ત્યારે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીએ પ્રવચનમાં ફરમાવ્યું કે જ્ઞાન અને રાગ જુદા છે, તેનું ગોલન
શ્રી સોગાનીજીએ આખી રાત ચાલતા કે વહેલી સવારે સમ્યક દર્શનને લઈને ઊભા થયા. મને તેમનો પરિચય પ્રત્યક્ષ હતો. તેમને અપરિણામીની ધૂન હતી. બેઠા હોય તો જાણે પ્રતિમા લાગે. આવા જે સમ્યક દ્રષ્ટિ પુરુષ છે તેમનો પ્રત્યક્ષ પરિચય મને તો ખરેખર નથી. શ્રી લાલચંદભાઈ તેમને સોગાનીજીનો ખૂબ જ પરિચય હતો. 2018થી 2020 સુધીની 3 વર્ષ સુધી તેમને સોગાનીજીનો ઘણો જ પરિચય રહ્યો અને તેમણે જે પ્રસંગો અમને વર્ણવ્યા છે તે હું અહીંયા અત્યારે આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. ये दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम जो आत्मा के आश्रय से होता है ये बात मुझे बहुत खटकती है. આમ કહેવા પાછળ એમનો આશય એ હતો કે ખરેખર પર્યાય પોતે પર્યાયથી નિરપેક્ષ છે અને એ સત છે, એને કોઈની અપેક્ષા ખરેખર હોતી નથી તેવું તેમણે દર્શાવી અને આત્મા અકર્તા સ્વભાવી છે તેવું ત્યાં સિદ્ધ કર્યું. બીજું ત્યાં ને ત્યાં જ એમણે એ વાત કરી કે પર્યાય મેરા ધ્યાન કરે તો કરે, મેં તો ધ્રુવ હું, મેં કિસકા ધ્યાન કરું. આ વાત સાંભળતા જ શ્રી લાલચંદભાઈ એમ કહેતા કે મને એમ થયું કે આ પુરુષ તો ખરેખર એકાવતારી પુરુષ લાગે છે. હું 12 વર્ષનો હતો ત્યારે મારા સૌભાગ્ય હતા કે પૂજ્ય નિહાલચંદભાઈ સોગાનીજીનો પરિચય થયો. પહેલી વખત જ્યારે એ સોનગઢ આવ્યા ત્યારે મારા દાદી જે જૂના મકાનમાં રહેતા હતા ત્યાં એમનો નિવાસ સ્થાન હતું અને તેથી આ પરિચય થયો. મારા દાદીને ખૂબ જ નવાઈ લાગી એટલે મારા પિતાજી ડૉક્ટર નવરંગભાઈને એમણે વાત કરી કે કોઈ એક એવી વ્યક્તિ કલકત્તાથી આવી છે કે જે કલાકોના કલાકો સુધી આખી રાત સુધી ધ્યાનમાં બેસી શકે છે અને ખાવા પીવાનું એમને કંઈ ભાન ન હોય, બીજી કોઈ જ ખબર ન હોય, પણ ધ્યાનમાંથી એક બહાર ન નીકળે એવી વ્યક્તિ આવી છે. તેથી મારા પિતાજીને પણ ઈચ્છા થઈ કે